First of all, I thank Family One organizers to invite me here. हम आमतौर पे एस्थमा पढ़ाते हैं, this time this is different. Every disease is not asthma. All that disease is not asthma. But the years we teach the students that asthmatics present with breathing, and if you come across on examination there is disease, it's most likely asthma. But in practical life, we see all that disease is not asthma. और बास asthmatics में disease नहीं होती. Family physicians come across these type of findings. Commonly, patient comes with wheezing, or you examine the patient and you listen to wheezing. So what is wheezing? It is a continuous musical sound produced by the opposing wall of the bronchi. Stridor is also a type of these. वैसी ही आवाज आती है. तो स्ट्राइडर को भी these समझ के फिर asthma ठीक हो जाता है. Few 2-3 slides about asthma. What is asthma? It is chronic inflammatory disease of the airways. Airways में chronic inflammatory process start हो जाता है. It leads to reversible airflow obstruction, bronchial hyperresponsiveness, और wheeze आता है. डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, चेस्ट में से आवाजें निकलती है, breathing disturbance. Some patients present with chest tightness, chest pain. Usually, it has these type of symptoms occur in every changing weather. या इस मौसम में हर साल ही हो जाता है. What is this? This is asthma. It occurs due to allergens to different things, pollens, house dust mites, chemicals, fungus, a lot of things can cause asthma. How to diagnose asthma? Asthma is a disease of all the airways, starting from major airways up to the small airways. ये आप स्लाइड देखें, इसमें दिस इज लेफ्ट साइड पे आपके नॉर्मल ब्रोंकस है और राइट पे इन्फ्लेम्ड ब्रोंकस. इसमें से जब एयर पास करेंगे तो सीटी की बात है कि दिस इज कार्डियो. हाउ टू डायग्नोज एस्थमा? एक छोटा सा टेस्ट है स्पायरोमेट्री. उसके जरिए आप एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन मेजर कर सकते हैं. एंड देन आफ्टर ब्रोंकोडायलेटेशन इट इज रिवर्सिबल. अगर 12% से ज्यादा रिवर्सिबल हो जाए तो इस एस्थमा. ये स्पायरोमेट्री के ग्राफ्स हैं. रेड लाइन इज शोइंग देयर इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. फिर आपने ब्रोंकोडायलेटर्स दिए, पार्शली इंप्रूव हो गया. ग्रीन लाइन नॉर्मल. इसमें देखिए आप नॉर्मल ऐसे होना चाहिए और एस्थमेटिक्स में ये ग्राफ है. अब आते हैं टॉपिक की तरफ. एस्थमा कॉमन डिजीज है. एस्थमा के बाद वी हैव मेनी क्लिनिकल केसेस रेफर्ड फ्रॉम द डिफरेंट पीपल विद द डायग्नोसिस ऑफ डिफिकल्ट टू कंट्रोल एस्थमा. एस्थमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं होता इसका. Actually, all have very different diagnoses. और unluckily, इनमें से बहुत से patients long periods of investigations, unsuccessful treatment, high dose steroids, nebulizations, और फिर steroid side effect भी आए होते हैं. ये सारा इस्तेमाल कर चुके थे. 3-4 केसेस आपको दिखाऊंगा. पहले तो ब्रीफ सा कि acute bronchitis can present like asthma. उसमें भी सांस खराब हो जाएगा, wheezing होगी, कफ होगी, और अक्सर लोग उनको मोटिलुकास्ट और इनहेल स्टीरॉइड्स पे डाल देते हैं. तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या होगा कि यूजुअली दे स्टार्ट विद फ्लू, फीवर, सोर थ्रोट, होर्सनेस एंड कफ. एस्थमा में होर्सनेस नहीं होती. अंडुल के बाद में वो इनहेलर इस्तेमाल करके हो जाए उसको. विद द स्टार्ट एस्थमा में होर्सनेस, सोर थ्रोट नहीं होगा.
दूसरा पेशेंट है ब्रोंकिटिस, बचपन से ऑफ एंड ऑन खांसी हो रही है, वीजिंग हो रही है, आस्कल्टेट किया है, अस्थमा की दवाई, वांटेड टू आस्क स्टीरॉइड्स। एक्चुअली ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं रिपीटेड फीवर्स, प्रोडक्टिव कफ एंड वीजिंग। अस्थमा फीवर भी होता है, ब्रोंकाई के साथ फ्रैक्चरेशन भी आ रही होगी। थर्ड इज सीओपीडी। अभी तक हमारे बहुत सारे फिजिशियन सीओपीडी और अस्थमा को डिफरेंशिएट किया। बोथ आर द डिजीज ऑफ द एयरवेज। एक एलर्जी की वजह से हो रही है, दूसरी स्मोकिंग की वजह से हो रही है। दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अब एक आपको केस दिखाते हैं। लुक्स लाइक एस्थमा, ट्रीटेड एज एस्थमा बट नॉट एस्थमा। 18 years old boy shifted from medical ward to a ward with bursting, shortness of breath, bilateral ankle edema and confused mental status for 2 months. Shortness of breath, ankle edema or confused. History date as 2007 when he started having difficulty breathing. It was gradual, progressive, and he has wheeze-like feeling in the chest, which worsens on exertion as well as on lying flat. But he has no orthopnea, PND, chest pain, no hoarseness of voice. He was treated for asthma for 12 years. 12 साल वो एस्थमा की दवाई लेकर है। लाहौर और पिंडी का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा उसने। In 2013 उसको सीवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया, पर which he was admitted in the hospital। वहाँ पे उसकी ट्रेकियोस्टोमी हुई and they diagnosed कि इसका एक vocal cord paralyzed है। There are lot of investigations for the cause of vocal cord paralysis, कुछ नहीं मिला। तो ही visited multiple hospitals for his symptoms। हर जगह पे उसके पास inhalers, nebulizations, steroids। ये उसका एक्सरे था जब आया, bilateral bronchials, दोनों साइड पे उसके bronchials आ गए। ABGs में उसकी PCO2 was 72, एस्थमा में PCO2 नॉर्मल रहता है। CT उसका हुआ था। CT again shows bilateral effusions more on the right side, but pulmonary hypertension more. Pulmonary hypertension. फिर हमने इसकी spirometry की। Inspiratory limb is flat। ये भी ऐसे होना चाहिए हो। एक्सपायरेटरी लिप ठीक है। आपकी एस्थमा में प्रॉब्लम इज विद द एक्सपायरेशन, सांस बाहर निकालते बस रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन अकर्स इन द एक्सपायरेटरी लिप। इसका एक्सपायरेटरी नॉर्मल है बट इंस्पायरेटरी लूप इज फ्लैट। इंस्पायरेटरी लूप फ्लैट होगा तो इसका मतलब यह है कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे। इसका एको हुआ था। He has severe pulmonary hypertension, 63 pressure था इसका pulmonary artery। नॉर्मल कितना था? 25। 63 प्रेशर उसका pulmonary hypertension की वजह से होता है। उसकी हमने इमीडिएटली ब्रोंकोस्कोपी की। इसकी क्या मसला है? देखिए, these are the vocal cords। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन vocal cords खुलते हैं तो सांस अंदर जाएगा। इसको देखा कि इंस्पायरेशन में vocal cords बंद हो रहे हैं, ये बंद हो गए, थोड़ा सा ही खुला हुआ यहाँ से सांस लेते और एक्सपायरेशन में कुछ खुल जाते हैं। He has paradoxical vocal cord motion defect। ना इसकी vocal cord पैरालाइज हुए, ना इसको ट्यूबर है। पैराडॉक्सिकल वोकल कॉर्ड मोशन डिफेक्ट, उल्टा होता चल रहा है।
जब दरवाज़ा बंद होगा तो वेंटिलेशन नहीं होगी, तो PCO2 बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, कार्पल्मोनियल, प्लूरल फ्यूजन, एंगल एडिमा, जेविकी रेस। इसकी ट्रीटमेंट तो कोई दवाई नहीं है। CPAP इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। हमने इसको CPAP अप्लाई किया। प्रेशर ऑफ 8 कंटिन्यूअस एयर में प्रेशर देते हैं बाहर मशीन से। पॉजिटिव एयर में प्रेशर मशीन के जरिए देते हैं। अब बाहर से जिस तरह आप किसी के मुंह पे मुंह रखते हैं, जोर से फूंक मारे, दिस इज CPAP। कंटिन्यूअसली पॉजिटिव प्रेशर बाहर से होता है, जो कि आप स्लीप एप्निया में इस्तेमाल करते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट हैपेंस है, ये उसका 2 हफ्ते बाद का एक्सरे है। प्लूरल फ्लूइड गायब हो गया सर। एको कराया तो उसका प्रेशर 30 भी आ गया था विद इन 2-3 वीक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो डायग्नोज हो गया कि पैराडॉक्सिकल वोकल कॉर्ड डिफेक्ट है। व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस? ये क्यों हो गया यंग लड़के को? तो डिफरेंट कॉजेज है। वन ऑफ द कॉज इज जर्ट, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स। उसकी एंडोस्कोपी प्लान, ये एंडोस्कोपी की रिपोर्ट है, ये उसकी पिक्चर है। सीवियर गैस्ट्राइटिस, एसोफेजाइटिस, उसकी वजह से वो रिवर्स करके सारा डैमेज कर रहा था अपने वोकल कॉर्ड्स को, और विद पैसेज ऑफ टाइम वो उसने वोकल कॉर्ड कैरोटिनॉइड मसल को डैमेज किया, जिससे पैराडॉक्सिकल मोशन हुआ। केस नंबर 3, जर्ट की ट्रीटमेंट से वो बहुत बेहतर हो गया, बट ही यूजिंग CPAP स्टिल नाउ, लेकिन ग्रेजुअली ये भी खत्म हो जाता है। 29 years male came with complaint of shortness of breath associated with wheezing. Basically टॉपिक हमारा है कि अपनी wheeze is not asthma, उसको भी wheezing हो रही थी, फिर बस टाइम ये wheeze के साथ है, breathlessness के साथ। 6 महीने से एस्थमा का इलाज कर रहा था, स्टीरॉइड्स, नेबुलाइजेशंस, नो इम्प्रूवमेंट। उसको मल्टीनोड्यूलर गाइटर दिखाई, उसकी नेक के ऊपर। गाइटर इज कॉमन डिजीज इन आवर कंट्री, मल्टीनोड्यूलर गाइटर। और ऑस्कल्टेशन देयर वाज फिक्स्ड पीस, उसके बेसलाइन टेस्ट सारे ठीक थे। ये उसका एक्सरे है, तो ये स्पायरोमेट्री है। Again you can see flattening of the lower limb of this flow volume loop. Flow volume loop में lower limb उसका फ्लैट हो गया, जो कि कन्वेक्स होता है। CT कराया तो मल्टीनोड्यूलर गाइटर था, जो कि ट्रेकिया के पीछे भी चला गया था और ट्रेकिया के अंदर भी घुसा हुआ। ब्रोंकियल्स की ये बड़ा ट्यूमर ट्रेकिया के अंदर उसके ट्यूमर है, जो कि उसको व्हीजिंग प्रोड्यूस कर रहा है और सांस लेने में दुश्वारी कर रहा है। आफ्टर सर्जरी ये आ गया, एंड इट प्रूव्ड टू बी एडनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। केस नंबर 4, 40 years female, gradually progressive breathlessness for 20 years, 40 साल की है, 30 साल से सांस रख रहा है। She also had multiple cardiac जिसकी उसने 15 साल पहले सर्जरी करा ली, और सर्जरी के बाद उसका सांस ज़्यादा खराब हो गया। She was complaining of productive cough and wheezing, इसीलिए सांस लिया था। So गाइटर रिग्रो कर गया for the last 2 years. His saturation was approximately normal 96% at rest, but with 6-minute walk test it dropped to 90%.
and she has also monophonic bronchi all over the chest. एक जैसे एस्थमा में पॉलीफोनिक ब्रोंकाई होते हैं, मल्टीपल आवाजें आती हैं, डिफरेंट किस्म की आवाजें, जैसे कमरे में से डिफरेंट आवाजें आती हैं। मोनोफोनिक इस एक ही तरह की आवाज आपको ऊपर की साइड देगी, राइट लेफ्ट हर जगह चलेगी। She was treated for asthma for 20 years. पार्शियल रिस्पॉन्स होता था, साथ में एंटीबायोटिक्स को दे रहे थे लोग, कुछ ठीक हो जाते थे। 2 हफ्ते पहले उसको इन्फेक्शन हुई और वो बस्टिंग ब्रेथलेसनेस के साथ हमारे पास आ गया। ये उसका एक्सरे इन्फेक्शन हुई है। Then the next test, सांस का जो भी मरीज आएगा उसका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है, स्पायरोमेट्री। अब आप देखें इसमें दोनों लिम्स फ्लैट हो गए, एक्सपायरेटरी लिम्ब, इंस्पायरेटरी लिम्ब। It shows fixed airflow obstruction. पहले वाले वेरिएबल थे कि इंस्पायरेशन में ब्लॉक होता था, एक्सपायरेशन में। ये इसकी अगर ब्रोंकोस्कोपी की सी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन उसके ब्रोंकाई इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रेकिया इकट्ठा हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है। हर सांस के साथ उसका ट्रेकिया कोलैप्स कर जाता है। So diagnosis of this patient is tracheomalacia. वो जो उसका 4-5 साल तक गाइटर पड़ा रहा है, उसने उसके कार्टिलेज डैमेज कर दिया, tracheomalacia, weakening of the cartilages of the trachea. जब वो सांस लेता था वो कोलैप्स कर जाता था, नॉर्मली उसको खुला रखना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट, she needs tracheal stenting. Tracheal stenting is very comfortable. So these are 2 cases where the symptom was these, the examination of the patient was showing wheezing, like asthma nahi tha. So if patient is not responding to treatment, if patient has some different treatment, different type of symptoms, उसको बार-बार स्टीरॉइड देने से बेहतर है कि आप उसको स्पायरोमेट्री करवाएं। Wheezing के causes है different, upper airway obstruction भी हो सकती है, lower airway and then intrathoracic airway obstruction। Common causes क्या है? Commonest तो asthma ही है। Then respiratory airway infection, bronchitis, bronchiectasis, COPD, जर्ट, never miss the जर्ट। तो जर्ट का आपने एक पेशेंट देख लिया कि 16 साल से वो एस्थमा का इलाज कर रहा है, ब्लड उसको था। Then upper airway dysfunction, endobronchial obstruction, inhaled foreign body. Sometimes it occurs in heart failure, pulmonary edema due to mitral stenosis, उसमें भी wheezing आती है। जब कभी इन्फेक्शन होती है, किसी वजह से हार्ट फेल पड़ता है तो wheezing स्टार्ट हो जाती है। अप्रोच कैसे करें पेशेंट, wheezing का आ गया, कैसे अप्रोच करें? उसकी सिर्फ हिस्ट्री सुन लें चंद मिनट के लिए, इट विल क्लियर द डायग्नोसिस। गौर से उसकी हिस्ट्री सुन लें, उसमें उसकी सिम्टम्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट है, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा होगा ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा, देन थिंक ऑफ द और बीमारी का। जनरली जो इन्फेक्शन है, शोर थ्रोट, होर्सनेस हो जाती है, गला बैठ जाता है, these are infections. ऑनसेट, एस्थमा का ऑनसेट सडन होता है, ये जो अपर एयर इन्फेक्शन है ग्रेजुअली ऑनसेट होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, तो इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंट्यूबेशन, सी सेक्शन, हेड ट्रामा, अभी न्यूरोसर्जरी वाले ऑपरेशन कर रहे थे, इंट्यूबेशन करते हैं, तो अगर कुछ दिन इंट्यूबेशन आए तो उससे ट्रेकियल स्टीनोसिस हो जाता है। ऑपरेशन कराया था, उसके पास सांस खराब हो गया, इट मे बी ट्रेकियल स्टीनोसिस, देन ट्रेकियोमलेशिया। ये फ्लो वॉल्यूम ट्यूब्स
वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ये इंस्पायरेटरी या फ्लैट लगेगी। वेरिएबल इंट्रा थोरेसिक होगी तो एक्सपायरेटरी या फ्लैट लगेगी। फिक्स्ड होगी तो दोनों ने फ्लैट लगेगी। तो स्पायरोमेट्री छोटा सा टेस्ट है, 2 पार्ट से डायग्नोज हो जाता है। फिर काज देखेगी कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, डायरेक्टली उसको एग्जामिन करते हैं। कैन बी डन बाय लेप्रोस्कोपी और बाय इस पेशेंट जो पहला पेशेंट मेरे पास इसकी लेप्रोस्कोपी बहुत दफा होगी। उन्होंने इसका गेस किया कि देयर इज वन मोटर कार्ड पालसी। एक्चुअली तो उस मोटर कार्ड पालसी थी नहीं, पैराडॉक्सिकल मोटर कार्ड पेशेंट थी। So thank you very much. I think that's what I